Hello all, welcome back to your very own channel Classes with Neha. Let's have some fun with question number 1 from exercise 1.2 rational numbers. The question says represent these numbers on the number line. Now before directly jumping onto the question, we must understand how do we represent rational numbers on the number line. For this, we will consider three types wherein numerator is less than denominator, equal to denominator and greater than denominator. Now we all know rational number is of the form P upon Q, where Q is not equals to 0. Herein P is referred as numerator and Q is referred to as your denominator. Now the first case is numerator is less than denominator. So I have considered 3 upon 5. You can see numerator is 3 and denominator is 5 and 3 is less than 5. So in such cases, the rational number 3 upon 5 will always lie between 0 and 1. Because when you divide 3 upon 5, you will get 0.6 and 0.6 will come somewhat over here. Okay, so it always lies between 0 to 1. Had it been minus 3 upon 5, it would have come between minus 1 and 0. Okay, so just remember, whenever your numerator is smaller than the denominator, that rational number will either lie, if it is positive, it will lie between 0 to 1, and if it is negative, it will lie between minus 1 to 0. Alright, so 0 to 1 and minus 1 to 0. Remember this. This is for positive, this is for negative. Now, coming on to the type 2 cases, when numerator is equal to denominator. For example, 3 upon 3. When I cancel this, what will I get? 1. And you know, 1 is represented over here. Had it been again minus, say minus 3 upon 3. I would have got minus 1. It would have been represented here. Not at all, no problems at all. Had it been 3 upon minus 3, again minus 1. Because this and this is same only. Okay. So if it is positive, both numerator and denominator, it would be 1. If one of them is negative, it has to be minus 1. और कोई केस तो हो ही नहीं सकता. चाहे 5 upon 5 हो, 6 upon 6 हो, 8 upon 8 हो, हमेशा 1 ही आएगा पॉजिटिव और नेगेटिव में हमेशा minus 1 आएगा. So this is one of the very simple cases. Coming on to the type 3, wherein numerator is greater than denominator. अब क्या है? Numerator बड़ा है. बड़ा है means 8 is your numerator and 5 is your denominator. Now if we represent this in mixed fraction, it would be 1 3 upon 5. Now this rational number 8 upon 5 will lie between, जो यहाँ पर आ रहा है नंबर वो as it is आप लिख देंगे 1 और जो उसके next number आता है 2. So this rational number on the number line will lie between 1 and 2. Okay, यहाँ पे somewhat lie करेगा. Why? Because 3 upon 5 is 0.6. So 1 plus 0.6 is 1.6 और वो 1 और 2 के बीच में ही lie करेगा. Alright, so do remember these three types when we discuss the questions of representation on number line. Let's start with the first part of the first question. It says represent these numbers on the number line and the number is 7 upon 4. Now since it is 7 upon 4, it is a type 3 case. Why? Because numerator which is 7 is greater than denominator which is 4. So first and foremost I will be expressing it in mixed fraction. It would be 1 3 upon 4. Okay, how will I get this? Just I will show you when I divide. It is 1 3 upon 4. You can cross check also. 4 ones are 4. 4 plus 3 is 7. So it's 7 upon 4. Now this fraction will lie between 1 and 2. Why? Because I already told you whenever I express it in mixed fraction, write this number as it is and the number next to this. So this will lie between 1 and 2. Alright. Now I have marked a number line wherein I have marked 0, 1 and 2. Now why? See, 1 and 2 के बीच में ये नंबर लाई करेगा. So 1 and 2 fields are mandatory. उसके आगे आप 3, 4 भी मार्क कर सकते हैं and 0, 0 के लेफ्ट पे भी आप मार्क कर सकते हैं. But 1 and 2 तो they are required only because this number is lying between those two numbers. Now roll of 1 finishes over here. Coming on to the fraction part, 3 upon 4. 3 upon 4 में what is 4 indicating? कि हमें 1 से लेके 2 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 4 पार्ट्स में. Why? Because denominator is 4. So I'll divide it in 4 parts. This is 1, this is 2, this is 3. Okay. Now see, this starting from starting point to end point. This is 1, this is 2, this is 3, this is 4. Alright. Now how will we come to know कि ये नंबर कहाँ पे लाई कर रहा है? 7 upon 4 या 1 3 upon 4. नीचे वाले पार्ट ने बताया कि हमें 1 से लेके 2 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है. ऊपर वाला पार्ट हमें जो 3 है नंबर वो बताएगा कि कौन सा नंबर हमें लेना है. 1 2 3. हमें हमेशा शुरुआत जो करनी है वो
इससे करनी है, नॉट फ्रॉम हियर, ओके। बिकॉज अगर आप यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 ये आपका गलत होगा। यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम हियर। सो इट इज 1, इट इज 2, इट इज 3। यहाँ पे आप एरो मार्क करिए। दिस नंबर वुड बी 7/4 और 3/4, ओके। ऊपर वाला नंबर सिर्फ हमें ये बता रहा है कि कौन सा पार्ट हमें लेना है, और नीचे वाला पार्ट बता रहा है कि हमें 1 से 2 को कितने पार्ट्स में आगे डिवाइड करना है। सो दिस इज हाउ वी विल रिप्रेजेंट 7/4 ऑन द नंबर लाइन। यू कैन मेक अ नोट ऑफ दिस। Coming on to the second part, the second number which we have to represent on the number line is -5/6. Now, since it is a negative number and this is a type 1 case because numerator is less than denominator, okay, so this will lie between, I already told you, अगर ये suppose 5/6 होता तो ये नंबर किसके बीच में लाई करता, 0 और 1 के बीच में लाई करता है। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते। नाउ सिंस इट इज नेगेटिव, इट विल लाई बिटवीन -1 एंड 0, ओके। रिमेंबर दिस, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, सो हमें पता लग गया दिस नंबर विल लाई बिटवीन -1 and 0, एंड अकॉर्डिंगली आई हैव मेड अ नंबर लाइन wherein I have marked -1 and 0. All right. Now, since it will lie between -1 and 0, and the denominator is 6. डिनोमिनेटर इज 6, मतलब हमें -1 से 0 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 6 पार्ट्स में। सो दिस इज 1 2 3 4 5। सी, दिस इज फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, ओके। सो वी हैव डिवाइडेड दिस इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। नाउ कमिंग ऑन टू द न्यूमरेटर पार्ट विच इज 5 मतलब हमें फिफ्थ पार्ट लेना है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0। क्यों? जब भी हम पॉजिटिव के लिए काउंटिंग करते हैं वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम नेगेटिव स्टार्ट करते हैं तो हमेशा वी स्टार्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अगर हमारी ये नंबर लाइन पॉजिटिव के लिए होती तो हम लोग ऐसे काउंटिंग करते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव के लिए है तो हम काउंटिंग हमेशा 0 से बिगिन करेंगे। सो मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस। तो हमें कौन सा पार्ट चाहिए, फिफ्थ पार्ट। माइनस में है, वी आर ऑलरेडी टेकिंग ऑन द लेफ्ट साइड। फिफ्थ पार्ट हम काउंट करेंगे। दिस इज फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, third part, fourth part, fifth part. So this is your -5/6 on the number line. Okay. So please make sure that you remember all this and make a note of this. Buckle up your shoe as we start with question number 2. It says represent -2/11, -5/11, -9/11 on the number line. Now this is type 1 case. Why? Because in all the 3 fractions the numerator is less than denominator, since all the numerators are in negative sign. So we all know whenever it is negative, these all fractions will lie between -1 to 0. I have already explained you that, okay. Now let's draw a number line wherein I have marked -1 and 0. Now since the denominator is 11, I will be dividing it into 11 parts. So let's do that. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Okay, see I have divided into 11 parts. Just check it out. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. All right. Now coming on to the first fraction, -2/11. Since it is negative, we will be starting counting from this left side, और 0 के लेफ्ट पे तो नेगेटिव नंबर्स ही होते हैं। तो जब भी 0 के लेफ्ट पे नेगेटिव नंबर्स हैं तो उसकी काउंटिंग हमेशा हम ऐसे करते हैं, और जब भी पॉजिटिव नंबर्स है तो हम काउंटिंग 0 के राइट हैंड साइड से करते हैं, लेफ्ट टू राइट, ओके। सो दिस इज -2/11. सो दिस इज -1 -2. सो दिस नंबर वुड बी -2/11, okay. 1 2, and since it is on the left side of 0, it is obviously negative, -2/11. Coming on to the next one, which is -5/11. 1 2 3 4 5. So this is -5/11. All right. Okay. Coming on to -9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So this is -9/11. So this is how we'll represent these fractions on the number line. Okay. And one more thing, this would be -10/11 and this would be -11/11. And -11/11 जब cancel होगा तो क्या आएगा? -1, and this is -1 only. Okay. So this is how we'll do question number 2. So please make a note of this. Thanks for watching. Stay tuned for more videos. Do like, share and subscribe to my channel. Till then, keep smiling, be happy and take care.